So as per the TCM, there are many types of the heart pain. Do you know how many types of the heart pain as per the TCM? क्या आप जानते हैं कि हार्ट पेन कितने प्रकार का होता है टीसीएम के अनुसार? So as per the TCM, there are 9 type of heart pain. 9 प्रकार का होता है. And EOV can treat all 9 types. सभी प्रकारों को हम EOV के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं. So first we'll see directly the treatment of all 9 types of the heart pain. If you want, then I will tell you what all 9 types. अगर आप चाहेंगे, नहीं तो बस समझ लीजिए कि सभी 9 प्रकार के हार्ट पेन का इलाज हम टीसीएम से ईओबी से कर सकते हैं. So here, नौ प्रकार के हृदय शूल या हार्ट पेन. One patient is having 52 years of age, male patient. The patient reports cold sensation in the chest area, accompanied by intermittent sharp chest pain. Pain worsened with exposure of cold weather or the cold drinks. तो ये जो पेन है ये बिगड़ जाता है ठंड से, whether the exposure of the cold or the cold weather. The 52 years of old person. So this is also coming under the 9 kinds of the heart pain as per the TCM. हमारे जो TCM में 9 प्रकार के हार्ट पेन होते हैं उसमें ये भी एक प्रकार है. This is also the one type. So in this type, what is happening? So cold is invading the heart. So for any types, we definitely use Spleen 4. Spleen 4, even we can use Pericardium 6. I will add the Pericardium 6. As soon as we put the Spleen 4 in the Pericardium 6, we will see quick effect. हम तुरंत ही रिजल्ट देखेंगे. हमने जैसे ही Spleen 4 को लगाया और Pericardium 6 को लगाया, हम इसका असर देखेंगे तुरंत. Right. So Spleen 4, we know the Chongmo. The root of the Chongmo is passing through the heart. So all types of the heart pain, whether because of any reason, 1 to 9 types of the heart pain, we can treat with the help of Spleen 4. So Spleen 4 will clear obstruction in the heart meridian and harmonize the middle GI. हमारे पूरे के पूरे middle GI को ठीक करेगा. And Pericardium 6 we can put in the last. I have treated some patients and we have seen quick effect in the cardiac problem. Means in the acute heart pain. We can use Pericardium 7, which is the very good point to calm down the spirit, calm down the heart. हम इसका प्रयोग कर सकते हैं Pericardium 7 का. ये जो Pericardium 7 है ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है to calm down the heart and to calm down the shan. Pericardium 7. Right. So we can use this as a second point. We can use CV12. CV12 is the meeting point of all the young meridian. हमारे सारे के सारे young meridian का meeting point है. Because this person is having cold feeling. This person is having sensation of cold. And it's increasing with the cold weather and the cold drinks. So we will be
Stimulating the CV12. CV12 is the meeting point of all yang meridian. हमारे सारे yang meridian का meeting point है CV12. And spleen 1 is the point promote circulation and very good for stagnation. So this is the protocol. ये सारे protocols पर काम करेगा. 3-4 सेशन में पेशेंट को बहुत फायदा मिल जाता है. 3 to 4 sessions. If you want to know what all 9 types of the heart pain, so heart pain because of the chi stagnation, blood stasis, cold, just we have seen, flame obstructing the heart, heat, yin deficiency, yang deficiency, chi blood deficiency, and heart kidney disharmony. ये 9 प्रकार के हार्ट पेन हो सकते हैं. In the TCM, we have treatment for all 9 types. We have different treatment. But in the EOV, spleen 4, pericardium 6, pericardium 7, spleen 1, CV12, some little bit changes we have to do. But this is general protocol for all types of the heart pain. सभी प्रकार के हार्ट पेन का जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट कॉम्बिनेशन है. I would like to bring a focus quickly on all different type of the heart pain. एक बार हम different type of the heart pain का quick summary कर लेते हैं. Is it good or no need? Need it? Or you are happy with one protocol for all 9? No needed, no? Okay. So we are moving to the next protocol. If not needed. Okay, needed. Then we'll discuss. Okay, let me open 9 types of the heart pain. Okay, so we'll go through quickly with all 9 types of the heart pain one by one. So this is the type 1, chi stagnation. Had we seen chi stagnation, blood stagnation, cold stagnation, phlegm stagnation, phlegm obstructed, like heat, yin deficiency, yang deficiency, chi blood and the heart kidney disharmony. So let's see first chi stagnation. CV17 is the influential point of chi. जो CV17 होता है, जो हमारे दोनों निपल्स के बीच में होता है, it is the influential point of chi. Okay, so we are using CV17. It's a wonderful point. Pericardium 6 is one of the great point for is a distal point of chest. But here we are using it because it will move the chi, move chi stagnation. Pericardium 6 will move the chi. CV17 also promote chi circulation. Promote chi circulation, right? Liver 3 is one of the great points for liver chi stagnation. We know that chi stagnation means liver chi stagnation. So liver 3 very good for liver chi stagnation. And stomach 36 is harmonizing because stomach going from the chest, हमारे chest से जाता है. So we will study it all point. Okay, very important, very good protocol. If it is because of the chi stagnation, how you will find that person is having chi stagnation? पता कैसे चलेगा कि भाई इसको chi stagnation है? Then we'll see. The person is having some emotional factors like stress, anger, frustration, causing stagnation in the heart meridian. कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा. Frustration होगा, anger होगा, stress होगा, कुछ emotional factors होंगे. And the person is having chest tightness. The sign of chi, like this is the balloon. If we talk about the balloon, balloon is filled with the air and very tight.
ची द एयर इज इनविजिबल, एयर दिखती नहीं है लेकिन फिर भी टाइटनेस क्रिएट कर रही है. सो ची इज लाइक दैट. सो द पर्सन विल बी हैविंग चेस्ट टाइटनेस एंड पेन, एंड दिस एग्रीवेटेड बाय स्ट्रेस एंड इमोशनल इश्यूज. कभी आपने देखा होगा कि कोई ऐसी खबर सुनी, कोई झगड़ा हो गया, कुछ वाद विवाद हो गया, तो आपको छाती में एक अजीब सा लगने लगता है. वही चीज स्टैग्नेशन. यानी कुछ नहीं हुआ, आपने किसी को बुरा बोल दिया. कई ऐसे पेशेंट कि आपने किसी को कुछ बुरा बोल दिया, बाद में आपको अच्छा नहीं लग रहा है छाती में. यू आर नॉट फीलिंग गुड आफ्टर टेलिंग समथिंग. आपने किसी को डांट दिया, गुस्सा कर दिया, किसी को आर्गुमेंट कर दिया, राइट, एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड इन योर हार्ट. व्हाट इज दैट डिस्कम्फर्ट फीलिंग? दैट इज ची स्टैग्नेशन. अगर आप एमआरआई करो, सीटी स्कैन करो, कार्डियोग्राम करो, कुछ नहीं आएगा रिपोर्ट में, क्योंकि वो ची है. ओके, now let's move to the point number 2. So we have completed the type 1, that is chi stagnation. Type 2, blood stasis. Blood stasis. Okay, blood stasis is dangerous. Second, blood stasis means जब आपने सुना है किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, एंजाइना पेन कि छाती से दर्द हो रहा है और हाथों में जा रहा है, वो क्या है? वो ब्लड स्टेसिस है. व्हाट इज दैट? दैट इज ब्लड स्टेसिस. कि किसी ने कहा यार छाती में एकदम से दर्द हो रहा है, जैसे आपने सुना होगा कि हाँ एकदम से हार्ट अटैक आया. वो क्या है? एकदम से पेन, एंड पेन इज गोइंग लाइक दैट, रिफरिंग, रेडिएटिंग पेन. One patient called me in the night 12 p.m. AM, sorry, night 12 a.m. I ran, then I found he's having radiating chest pain. मैंने तुरंत जिंगवेल पॉइंट की ब्लीडिंग कर दी, कान से ब्लड निकाल दिया, पेशेंट को ठीक हो गया. चाय वाय पी, बड़े खुश हो गए सब घर के लोग, हम भी खुश हो गए. चाय खत्म होती दर्द वापस आ गया. चाय खत्म पूरी में एक घूंट बचा था, दर्द वापस आ गया. पेन केम बैक. जिंगवेल पॉइंट आर गुड फॉर इमरजेंसी बट नॉट द सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन. दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, चिंता मत करिए प्रिया जी, सब दिख आ रहे हैं, आ रहे हैं. अब क्या करोगे? आपने कहा जिंगवेल पॉइंट फॉर इमरजेंसी, अब ब्लीड कर दिया, सब खुश हो गए, चाय नाश्ता आ गया, चाय नाश्ता खत्म नहीं हुआ, दर्द वापस चालू हो गया. अब तो सब आपको घूर घूर के देखेंगे भाई. अब फिर से ब्लड निकालोगे क्या? अभी तो खून खराबा किया इतना बार बार. So now it is not the permanent solution. I told many times, even I will repeat again here. What is blood stasis? Blood stasis means severe pain in the chest, fixed pain in the chest, stabbing pain in the chest. ऐसा दर्द हो रहा है कि कोई चाकू घोंप रहा है. Worst in the night, and it's radiating to the left shoulder. It is like a heart attack. So because this is the blood stasis, we have to use the blood point. What is the blood point? Urinary bladder 17 and the spleen 10. Sedation. Urinary bladder 17 and the spleen 10. Spleen 10 is very good point for blood and stasis. And UB17 is the influential point of blood or resolve stasis. Heart 7 को लगाइए और pericardium 6. Pericardium 6 is a very good point for pain. In this condition, I generally use focus on pericardium channel. हम पेरिकार्डियम चैनल पे फोकस करते हैं. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक लूस ऑक्सी पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम. लूस ऑक्सी मींस लियो पॉइंट, सोर्स पॉइंट, जीगलेट पॉइंट ऑफ द पेरिकार्डियम. वी कैन टेक द फ्रंट म्यू पॉइंट ऑफ द पेरिकार्डियम. वी कैन टेक द बैक पॉइंट ऑफ द पेरिकार्डियम एंड सेडेट ऑल. 5 पॉइंट लेके सेडेट कर देते हैं.
loose oxy, Leo connecting point, source point, G cleft point, front mu point, back su point, set it all. Of pericardium. So Leo connecting point is pericardium 6. Source point is pericardium 7. G cleft point is pericardium 4. Front view point is the CB 17. And the back point is urinary bladder 14. Set it all. And at these points, set it all. Now there is done. Now there is a lesser chances the pain will come back. अब ट्रीटमेंट हो गया, अब ट्रीटमेंट हुआ, जिंगुअल पॉइंट ठीक है, आप दौड़े दौड़े गए, जिंगुअल पॉइंट से ब्लीड कर दिया, इमरजेंसी को आपने हैंडल कर लिया, लेकिन अब ट्रीटमेंट की बारी है। नहीं तो आप घर पे भी चले गए, बाद में पेशेंट का फोन आएगा आप गए थे, उसके बाद दर्द वापस हुआ तो हम हॉस्पिटलाइज हो गए। ओके, आप तो खुशी खुशी गए थे, लेकिन ऐसा हो गया। सो रिमेंबर दिस इज द सेकंड कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड ब्लड स्टेसिस। नाउ द थर्ड कंडीशन, दैट इज कोल्ड अटैक। अब हम तीसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि ठंड लग गई। देखो ठंडियों में हार्ट अटैक आते हैं क्योंकि ठंडी में चीजें सिकुड़ जाती हैं। द कोल्ड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक। So cold is concealing heart pain, the severe chest pain with a cold sensation, and it is relieved by warm, and also there might be cold limbs. The cold is blocking the heart meridian. जो cold है ना वो heart meridian को block कर रहा है। Immediately you do moxa on CV6 and CV8. नाभि पर मोक्सा करो, सबसे पहले नाभि पर मोक्सा करो। ओके, CV17 पर मोक्सा करो। डू द Moxibustion on CV17 एंड पेरिकार्डियम 6 लगा दो, इतना काफी है। और इफ यू वांट यू कैन डू CV6, CV12, stomach 36 Moxibustion. They will increase the yang. Or this option, another option, CV6, CV8, CV17, pericardium 6. ध्यान रखिएगा, हम टॉनिफाई कुछ भी नहीं करेंगे, मॉक्सिबेशन कर सकते हैं लेकिन टॉनिफाई कुछ नहीं करेंगे। आप ऐसा मत समझिएगा कि मॉक्सा का मतलब टॉनिफिकेशन। मेनी पर्सन गेट कंफ्यूज कि मॉक्सा मतलब टॉनिफिकेशन। हार्ट पेन हो रहा है तो टॉनिफिकेशन नहीं कर सकते, सेडेशन करेंगे या मॉक्सिबेशन करेंगे। वी विल सेडेट द कोल्डनेस और वी डू मॉक्सिबेशन। मॉक्सा इज द टेक्निक, जैसे हम गर्मी को लाते हैं तो ठंडी सेडेट हो जाती है ना, गर्मी लाए तो ठंडी सेडेट हो गई। तो हमें ठंडी को सेडेट करना है, कोल्डनेस को सेडेट करना है। कैसे सेडेट करेंगे? गर्मी लाकर, मोक्सा लाकर, गरम गरम सिकाई कर देंगे, गरम पानी की बोतल छाती पर रख देंगे, कपड़े को गर्म पानी में डाल के थोड़ा सिकाई करेंगे, पेशेंट को गुनगुने पानी में यहाँ तक बिठा देंगे। वी कैन डू मेनी थिंग्स लाइक doing the hot fermentation, keeping the hot water bottle or the hot water pack, doing the moxibustion, even doing the moxibustion on the front side, in the back side. सुजोग में भी यहाँ हार्ट पॉइंट पे मोक्सा कर सकते हैं। वी कैन डू द moxibustion on the heart point here. Ultimately, if the person is having discomfort with the cold, then work on the cold. ठंड से उसे प्रॉब्लम है, ठंड को दूर करो, ठंड को भगाओ। Now, the pattern number 4. अब हम चौथे पैटर्न की बात करते हैं। The pattern number 4, there's a flame is obstructing the heart and creating the pain. Flame. Because flame and dampness can block the heart meridian. Person will be feeling heaviness and the chest pain. And also there might be coughing and sputum. कफ भी निकल सकता है, स्पूटम भी आ सकता है। खाना खा के जो सो जाते हैं, जो लोग खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, दोपहर में खाना खा के सो जाते हैं,
या ज्यादा कफ वाला खाना खाते उन्हें हो सकता है. The people eating lots of kapha food, food with lots of phlegm, they might suffer. What is the sign? Heaviness. The dampness is creating heaviness. जैसे छाती पर वजन रखा हुआ है. And cough. So quickly, what we'll do first? We will remove the phlegm. For removing the phlegm, we have to first stomach 40. This is a very good point for basically called stop phlegm point. ये कफ को निकालने वाला बिंदु है stomach 40. It is transforming the phlegm and clear the channel. Then CV12 is one of the great points. We know the CV12 and the UV20. They're the 2 points are for spleen. And if you strengthen the spleen, then we can reduce the phlegm. So we are taking CV12. Even we can take UV20. हम UV20 भी ले सकते हैं. Then we are taking pericardium 6 for chest cavity. Distal point of the chest, which is calming down the spirit. And we can take lung 9. Lung 9, right? Tonify or sedation depend on the condition. If the chest pain, very acute chest pain, we can't tonify. But lung 9 is a very good point for lungs. It is a source point of lung because the person is having phlegm. कई बार लोगों के फेफड़ों में लंग्स में फ्लेम होता है. जैसे आप कई बार देखोगे पेशेंट हार्ट कई प्रकार, जैसे एक पेशेंट खांसता रहता है. मैं आपको बताऊं, मेरे फ्रेंड की मदर गई थी कहीं दर्शन करने. कोई ऊपर गई थी पहाड़ी पर नॉर्थ इंडिया में. देयर वेरी क्लोज फ्रेंड लिव्स इन सूरत. She was having coughing. She all used to coughing since many months. Okay. And she went there, and because of their reaching, some cold weather was there. She keep getting कफा होता गया और she got heart attack there. उनकी वहां से डेड बॉडी लेके आए वहां से बस उसी बस में. ओके. तो मैंने पूछा क्या हुआ था, क्या कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी. उन्होंने कहा नहीं, हार्ट में तो कोई पेन नहीं था उनको. बीपी की मेडिसिन खाती थी. She was taking the medicines of blood pressure, but she was having only coughing. So remember one thing, if the person is having coughing, you have to diagnose properly whether this coughing because of lungs or because of the heart. Because many times people are suffering with a heart problem and they are having coughing. And sometimes there is a combination of the lung and heart. कभी कभी coughing lung से होती है, कभी हार्ट के इन्वॉल्वमेंट से भी खांसी होती है. तो आपको इग्नोर नहीं करना, भैया खांसी तो है लंग्स में तो ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा. हार्ट अटैक आता है लंग का तो ठीक है, फेलर इतना आसानी से नहीं होता. So dry cough we can't tell it is because of the heart, but when the person is having coughing and having palpitation, some sign, and when climbing the stairs having some heaviness, it is a sign there is a problem with the heart. अगर वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, छाती में भारीपन आ रहा है और कभी कभी पाल्पिटेशन हो रहा है और खांसी आ रही है, तो आपको सजग हो जाना चाहिए कि हार्ट के लक्षण मिल रहे हैं. कुछ लक्षण जरूर मिलेंगे. उनको ये थे लक्षण, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया कि चलो खांसी तो है. So that is called phlegm is obstructing. It is also very common pattern of the heart attack or the cardiac failure. So the phlegm is obstructing the heart. It is also very common pattern. So stomach 40, one of the great point. CV12 is very good point for phlegm. Pericardium 6 and the lung 9. Now we are moving to the pattern number 5. Heat creating the heart pain. The heart is never like heat. Heart को गर्मी पसंद नहीं है. Never.
हार्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है गर्मी, हार्ट को पसंद है कूलिंग, ज्यादा कूलनेस भी नहीं, बट हार्ट वांट टू बी कूल. सो इफ हार्ट इज नॉट गेटिंग इनफ कूलिंग, अगर हार्ट को पर्याप्त मात्रा में ठंडी नहीं मिलती है तो प्रॉब्लम हो जाती है. इफ द पर्सन इज हैविंग सम इमोशनल इशू, then there might the heart heat might increase. If the person is having some heat attack, पैथोजन, किसी बीमारी, बैक्टीरिया का आक्रमण हो गया, पैथोजेनिक अटैक हो गया, तो हीट बढ़ सकती है. हीट बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं. रात को नींद नहीं आई, कुछ बीमारी हो गई, फीवर आ गया, इमोशनल प्रॉब्लम हो गई, देर को बहुत सारे कारण हो सकते हैं हीट बढ़ने के. देयर माइट बी मेनी रीजन दे माइट क्रिएट द हीट. सो हीट और फायर disturbing the heart due to the emotional disturbances or the heat pathogen. Then there is a burning chest pain, irritability, insomnia, red face and the palpitation. कि आपको गर्मी के लक्षण साफ साफ दिखेंगे. इसे नींद नहीं आ रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, छाती में जलन हो रही है और चेहरा लाल हो गया. यू विल सी द ऑल द हीट सिम्टम वेरी क्लियरली. Okay, then you have to treat the heat. So we will expel the heat by heart 8, which is the heat point, pericardium 8, which is also the heat point of the pericardium, Li 11, which is expelling the heat, and the Cv 17 is the local point of the chest. Very good combination. हम इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं. हार्ट 8, पेरिकार्डियम 8 ने गर्मी को निकाल दिया, Li 11 ने पूरे शरीर की गर्मी को निकाल दिया, Cv 17 ने छाती के को ठीक कर दिया. तो ये हमारा पांचवा पैटर्न. लेट्स मूव टू द पैटर्न नंबर 6. Yin deficiency, it's a very common pattern with the workaholic person, with the person not taking good sleep, or with the person indulge in excessive sexual activity. अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, उसका यिन कंज्यूम हो जाएगा, नींद नहीं आती, ये वर्कोहलिक है, ठीक से सोता नहीं है. वर्कोहलिक पर्सन, ऑल द लीडर्स, all the person very workaholic, working day and night, not taking good sleep, they might suffer with a yin deficiency and which create heart pain. We know what is the sign of yin deficiency. 5 palm heat, हम जानते हैं. Heat in the palm, heat in the feet, heat in the chest, that is called 5 palm heat or 5 heart heat. It is a sign of yin deficiency. और लक्षण है जैसे कि डल चेस्ट पेन. चेस्ट पेन कैसा होगा? डल होगा. हीट इन द पाम एंड सोल्स, नाइट स्वेट, रात को पसीना आएगा, ड्राई माउथ होगा और नींद नहीं आएगी. सो दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ द हार्ट yin लीडिंग टू द इनसफिशिएंट. ये yin डेफिशिएंसी है ना. तो भाई ये पैटर्न बहुत ही कॉमन है. ये तो पैटर्न हमारी मेरे फादर को ही हुआ था एक बार, चेस्ट पे पॉइंट लगाए, ठीक हो गया तुरंत ही. पॉइंट लगाए हार्ट के लिए, घुटना दर्द भी ठीक हो गया. ऐसा होता है, ऐसा ऐसा मतलब yin डेफिशिएंसी, because he was workaholic. He is workaholic still. Okay. So he suffered with the yin deficiency. So now we are having 6 formula that we know. Heart 6, kidney 6, spleen 6, pericardium 6. And we can use Cv 14. हमें yin का फॉर्मूला लगाना है और पहचानना बड़ा आसान है भाई. सारे yin के लक्षण मिल रहे हैं और हार्ट में पेन हो रहा है. सो दिस द 6th पैटर्न ऑफ द हार्ट पेन. 7th पैटर्न, yang deficiency creating the heart pain. Yang is very much important for heart. Yang बहुत इंपॉर्टेंट है, right? Yang will control the pores of the human body. If yang is deficient, then person will start getting sweating anytime.
day, night, wherever, anytime, all time, sweetie. क्योंकि यांग यानी चौकीदार जो पोर्स पर बैठा है कमजोर हो गया है. So yang deficiency, will see the sign. The first sign is cold extremities, हाथ पैर ठंडे. Yang is giving red color. If the yang is deficient, then there will not be red color and pale complexion. लाल रंग नहीं होगा तो पेल कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे. थकान, chest pain, dull chest pain. So because of the weak yang is not able to warm and circulate the blood. Okay. तो ये वीक यांग है, तो पसीना टपकेगा, हाथ पैर ठंडे रहेंगे. So one female was having this problem. She was suffering with the infertility and she came for the treatment of infertility. उसको infertility की प्रॉब्लम थी और उसने infertility के ट्रीटमेंट के लिए आई हमारे पास. I saw cold hand, cold feet, पूरे हाथ पैर ठंडे, पूरा शरीर ठंडा. And she used to have the palpitation sometime. कभी कभी से palpitation होता था. Occasionally chest pain. So yang deficiency also create infertility. So we have to increase the yang. CV6 is very good point for yang. CV17 is the chest point of the chest. U15 is the back point of the heart, and one of the great point is DU4. DU4 is one of the great point to improve the yang. यही yang को improve करने का. हम जब yang को improve करना चाहते हैं तो हम मिंगमेंग चक्रा की बात करते हैं. We talk about the मिंगमेंग चक्रा whenever you want to improve the yang. So मिंगमेंग चक्रा is located, means governing vessel 4 is the point we can see at the lower border of the ribs. If we draw the line, अगर हम ribs के lower border से horizontal line draw कर दें like this. Now in the center, if we go one finger up, that is a DU4. That is the point of मिंगमेंग चक्रा. अगर हम आगे चले जाएं तो CV6, फ्रंट में CV6 है, तो ये दो पॉइंट गजब के होते हैं. In the back sides, DU4, in the front side, CV6. They are improving the yang. So DU4 and CV6 other than CV17 and the UV15. CV17 is good for heart. U15 also good point for heart. So we'll do Moxibustion and tonification. A very wonderful protocol. क्या किसको लगाएंगे? जिसके हाथ में ठंडे होंगे, जिसको पसीना आएगा, जिसको छाती में दर्द होगा. The person is having cold extremities, pale complexion, chest pain. 8th, chi and blood deficiency. Chi and blood deficiency. Person is very, very weak. बहुत कमजोर है. Commonly after illness, suppose someone is suffering with a fever, some illness, COVID-19, malaria, dengue, or some disease, and after suffering for many months, to suffer with chi and blood deficiency. तो लंबी बीमारी के बाद ऐसा अक्सर होता है. So chronic illness or even the overwork will do. Person is working a lot, not taking enough nourishment. So there is a chi and blood deficiency will create this problem. I seen one patient having diabetes. For the diabetes, taking some medicine. And in the medicine, it's very clearly written, this medicine might create dizziness. ये medicine चक्कर पैदा कर सकती है. Because when the person is taking that medicine, some medicines, they are also consuming your chi. So whatever the reason, अगर आपकी chi और blood कम हो जाए, तो कमजोरी आएगी, थकान आएगी, chest pain होगा. So what we have to do? We have to, if you want to improve the blood
UV17 and spleen 10 are a very special point of blood. If you want to nourish the blood, stomach 36 and spleen 6 point are very good point for nourish the blood. ये दोनों पॉइंट हमारी स्प्लीन को मजबूत करते हैं, ब्लड को नरिश करते हैं. So stomach 36 and the spleen 6 are very good for blood. UV17 is the very good point for blood. Pericardium 6 is very good point for chest. And this protocol will increase the blood and chi. 8 type of heart pain. The 9th and the last type of the heart pain. Heart and kidney disharmony. Heart is the center of fire. Kidney is the center of water. Both are having very wonderful relationship. That is called heart-kidney harmony. Kidney is sending cooling effect. Heart is sending warming effect. दोनों एक दूसरे को ये भेजते हैं, एक कूलिंग भेजता है, एक वार्मिंग भेजता है, और दोनों मिलके काम करते हैं. This harmony get disturbed, then the person will suffer with the problems. Right. So person is having some emotional problems, because of some reason there is a happened disharmony between heart and kidney. Right. Then kidney will not able to cool the heart and person will be having anxiety. Kidney heart को cool नहीं कर पाएगी. Person will become anxiety, short temper. जब हार्ट कूल नहीं हो पाएगा तो व्यक्ति को शॉर्ट टेम्परनेस होगी, छोटी छोटी बातों में एंजाइटी होगी. एंजाइटी का मतलब है कि आपका हार्ट कूल नहीं हो पा रहा है, आपने कुछ सुना और आप एंसियस हो गए. So kidney is not able to cool your heart. So you are going in the anxiety. You are going in the your kidney is not cooling the heart, so you are not able to sleep. नींद आने के लिए हार्ट का ठंडा होना जरूरी है. Okay. Even you will see many signs of the heart, many signs of the kidney. You will see lower back pain. So let's see here. The pain with the anxiety. Remember, anxiety is the very important here. Insomnia and the lower back pain. Lower back pain is connected with the kidney. Anxiety, insomnia connected with the heart. So disharmony between heart and kidney. Heart 7, kidney 3, pericardium 6, and U20. Heart 7 for heart, it will calm down the spirit. Kidney 3 will help the kidney. Pericardium 6 for chest, and U20. It strengthens the heart-kidney connections. So this was the 9th type of heart pain. Now we will discuss today we discuss one protocol, first protocol only. And we have learned the description of the 9th type of the heart pain. Tomorrow onwards, we will be discussing more pattern of the hearts. I think all the clear. अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो वीडियो देख लीजिएगा. Thank you so much. Let's close the session and see you tomorrow. अब हम मिलते हैं कल. Closing now.